So now coming to the bulk unit weight gamma B for partially saturated soil. उसको गामा बी से यूनिट वेट है तो यूनिट वेट इज डिनोटेड बाय गामा एंड gamma b is for the bulk unit weight. So bulk unit weight is actually the total weight of soil mass divided by the total volume. So इसमें हो जाएगा weight of water plus weight of solid divided by, ये partially saturated soil के लिए, ठीक है. तो partially में हमने weight of water ले लिया, air का तो कोई weight नहीं होगा, weight of solids हो जाएगा divided by the volume of water, volume of solid, volume of air. For a saturated soil gamma b is equals to gamma saturated, ठीक है. Saturated मतलब completely saturated soil के लिए हो जाएगा, इसमें V है, वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो जाएगा. नाउ गामा वेयर W weight of water plus weight of solid divided by weight of water plus weight of solid, volume of water plus volume of solid. Here gamma saturated is equals to saturated unit weight of soil. So now coming to the another unit weight is dry unit weight, yani means there is no water in it. So for the dry soil gamma D is equals to weight of solids divided by volume of air plus volume of solids, ठीक है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 है. सो ड्राई सॉइल है तो यहाँ पर हम सिर्फ सॉलिड का ही वेट लेंगे एंड डिवाइड बाय द टोटल वॉल्यूम, दिस इज कैन बी डब्ल्यू एस डिवाइड बाय द वी. सो यू विल गेट, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसमें यहाँ पर एक वी भी आएगा, मैंने शायद मिस कर दिया है, इसको आप नोट कर लीजिए. Here the V will also come like this because ये W by V हो गया minus volume of water content into WS upon V. Weight of water is equals to this much. So gamma bulk minus weight of water content into gamma D is the dry weight of the soil, and gamma D is equals to this. This is the formula we are going to use in the numericals.